welcome to this Friday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद रवि। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत, नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिन्हें आप तक ला रहे हैं वी रवि कुमार। Government says fundamentals of economy are robust with inflation in control. Equity benchmarks decline around 0.8% amid negative global cues, and Rupee weakens 31 paise against the US dollar. सरकार ने कहा कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत है। नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख बाजार सूचकांक लगभग 0.8% गिरकर हुए बंद और रुपए में डॉलर के मुकाबले 31 पैसे की गिरावट हुई दर्ज। Of course, the first story is related to the Moody's downgrade. Government has said the fundamentals of the economy remain quite robust with inflation under check and bond yields low. It said India continues to offer strong prospects of growth in near and medium term. An official press release said the Government of India has noted that the Moody's Investor Services has changed the outlook on India's rating to negative from stable while keeping the foreign currency and local currency long-term issuers rating unchanged at Baa2. The government said India continues to be among the fastest growing major economies in the world and its relative standing remains unaffected. IMF in their latest World Economic Outlook has stated that Indian economy is set to grow at 6.1% in 2019, picking up to 7% in 2020. As India's potential growth rate remains unchanged, assessment by IMF and other multilateral organizations continue to underline a positive outlook on India. The government has undertaken a series of steps and reforms to strengthen the economy as a whole. The Government of India has also proactively taken policy decisions in response to the global slowdown. These measures would lead to a positive outlook on India and would attract capital flows and stimulate investments. Puneet, if you look at Moody's, we used to be Baa1 in 1991 before the devaluation happened, and then they brought us down. And after almost 26 years in 2017, Moody's was one of the guys who upgraded us. So, and the markets are obviously going ballistic, almost a 10-day bull run. What did they suddenly see? And in fact, a lot of economists have been calling it ridiculous, the decision of Moody's Investor Services. So how would you see it in perspective, that the decision of Moody's to downgrade to negative from stable? So Ravi, I'm also kind of in that camp, which believes that this move by Moody's is somewhat unexpected and strange because all said and done, I think India's macroeconomic situation is well under control. In fact, India's fiscal deficit, despite all the pressures that the economy has in terms of slowdown, in terms of the kind of reforms measures that government has taken, the fiscal deficit numbers are still within control. In fact, Moody's suspects it will probably be 3.7, but even if it is 3.7, it's not such a bad number to have. Moody's, in fact, that is one of the things on which it has based its outlook downgrade to negative, saying that maybe about 3.7. But let me just point out that, and again, it's kind of really funny. U.S. federal government deficit this year will be $1 trillion, which will be 4.5% of the GDP of USA, and US GDP is like $20 trillion. So US with a 4.5% deficit is considered almost AAA, and which is AA plus. But and India, they see that that's a challenge for macro stability. However, having said that, I think Moody's, of course, is cautioning on the fact that there is a slowdown in India. Government's response, it says, has not been adequate, which I think, again, I find a bit excessive, challenging. But my own sense is that beyond the point, I think we should not pay attention to these kind of things. They will have some impact because one would have expected bond prices to fall very sharply today. That did not happen. We didn't see a very significant fall in bond prices because usually credit, these kind of rating downgrades lead to increase in credit cost for the economy. And fortunately, that did not happen. We have sufficient liquidity and I think domestic stability. Of course, there has been some impact on companies which
which are linked to sovereign rating. So HDFC Bank, Infosys, TCS, all the companies which had very high ratings, they're usually 2 notches above the sovereign rating. Those companies have seen some kind of a downgrade also. But I don't, personally, if you ask me, there are many pros and cons of this step, but I don't think it will really have very long-term negative impact on the economy. I think we should continue to do business as usual, and as government has pointed out, they are taking several steps which will yield results, I'm sure, in the next quarter. And within, I remain as always optimistic that next 3 to 6 months we'll see economy do very well. ऐसे माहौल में जब पूरे विश्व में स्लो डाउन है, इनफैक्ट IMF ने जो पूरे विश्व के लिए दिया है, डाउनग्रेड किया है, ऐसे में आपको लगता है कि ये शायद इसका इतना संज्ञान नहीं लेंगे इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, और जो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आने के जो वो है मोमेंटम, वो प्रभावित नहीं होगा? कितनी आपको उम्मीद है? 2 प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी, किसी भी देश में. एक होते हैं जनरल इन्वेस्टर, अगर हम ग्लोबल फंड्स हैं जो भारत को खास तौर से या बहुत विशेष दृष्टि से नहीं देख रहे, उनके लिए ये काफी असर पड़ता है. बिकॉज जनरल जब वो रिव्यू करते हैं किसी देश में इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली वो एक रेटिंग को देखते हैं, दे डोंट गो इनटू द माइक्रोज ऑफ द सिचुएशन. लेकिन ऐसे निवेशक जो भारत में विशेष तौर से को स्टडी करते हैं, विशेष तौर पे उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी उनका स्पेशल इंटरेस्ट होता है किसी देश में, तो डेफिनेटली वो निवेशक जो है, वो इन्वेस्टर जो है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होंगे. तो इसका मुझे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट, इसलिए मैंने कहा कि बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं लगता है, बट डेफिनेटली some slowdown will be there because of this. फंडामेंटल्स कौन से ऐसे हैं जो आपको लगता है कि अभी हमारे मजबूती प्रदान कर रहे हैं हमारी पूरी ओवरऑल सिचुएशन को? जैसा भी मेरे को एंकर ने कहा कि हमारा सेंसेक्स भी इट्स ऑलमोस्ट नियर ऑल टाइम हाईज, आज हालांकि कुछ गिरावट आई है. सो ये जो एक उत्साहजनक माहौल है, ये इसके आधार क्या है? देखिए, आपने जो मैक्रो सिचुएशन की बात करी, यदि भारत की किसी भी देश के लिए ये बहुत 2-3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं. फिस्कल डेफिसिट की फिगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उसका कारण यह है कि यदि फिस्कल डेफिसिट हाई है तो उस देश की सरकार को बोरोइंग बहुत करनी पड़ेगी और उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ने का अंदेशा है. मुझे लगता है कि भारत का जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ना कोई बहुत पॉसिबिलिटी हाई नहीं है. तो वहां पर हमें कोई फिस्कल डेफिसिट से कोई खतरा पेश आए इकोनॉमी को, वो नहीं लगता. हमारा इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में है. इनफैक्ट इन्फ्लेशन जरूरत से ज्यादा नीचे है और थोड़ा सा बढ़ेगा तो भी कोई चिंता का विषय नहीं होगा. तो इन्फ्लेशन एक मैक्रो स्टेबिलिटी लाता है, वो बहुत हमारा कंट्रोल में है. करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब चीजें हैं जो कि भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसको इंपैक्ट करती हैं. ये सभी हमारे बहुत कंट्रोल में है और रिकॉर्ड लो पर है, यदि मैं आपको सच बताऊं तो मुझे लगता है कि जो मैक्रो नंबर्स हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था को पूरी गति मिलती है या अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है, वो भारत के लिए बहुत कोई चिंता का विषय नहीं है अभी फिलहाल. There's one thing that Moody's they have suggested is that the stress in the financial sector is unlikely to be resolved quickly, is what they are saying. Do you share their pessimism? Because a lot of things, it's almost one year since the initial DHFL Island FS thing happened. So, do you share that pessimism? Honestly, I think rating agencies always wake up to a situation much later. This is almost like in the films, where police arrives in the last scene. So, rating agencies have, and repeatedly we have seen that happen, when companies have gone into trouble, when financial systems have crashed. In 2008. And 2008, not only in India, it happens worldwide. I mean, they would, if you look at Argentina, in last 20 years of my memory, I think they've gone bankrupt thrice, and after that they have been able to issue bonds worldwide, and they again get investment ratings. All kinds of things happen because rating agencies really operate on many metrics. But I think the assessment that the financial sector is not going to recover is, I don't know what it bases on, because if you look at the numbers that we've got, out of I think 14 public sector banks that have reported numbers so far in this quarter, 13 have reported very high, very impressive profits actually. So, and the NPAs are now, net NPAs are almost below 5% for most of them. For the largest bank, State Bank of India, the net NPAs are almost at 3%. So, I don't see the reason why the financial sector will not be able to deal with the situation. And this is a very comfortable situation. The capital adequacy ratio for the entire financial sector, the banking sector, is now almost close to 13-14%. So, I don't see where those concerns are coming from. Yes, growth
growth is slow and growth is not picking up very fast. We're not growing rapidly, but that is the situation globally. So I'm not very clear where the pessimism from Moody's really comes from. So do you think the markets will that the markets fell today was a flash in the pan? They'll get back to their bullish ways tomorrow? So markets do get affected by such assessment, because FIIs, the foreign investors also, they look at these. I don't say that we ignore what Moody's says. It has an impact for international investors. Definitely, it would impact inflows into India to some extent. But I think we really have to just, take it in our stride and move forward. पुनीत, जो आप कह रहे हैं कि टेक इट इन आवर स्ट्राइड एंड मूव फॉरवर्ड, जो ऑलरेडी सरकार कर रही है, आपको लगता है कि वो ठीक पथ पर ही चल रही है? अगर हम मूडी से एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का अप्रोच भी हम लें उनके रेटिंग डाउनग्रेड की ओर, कॉर्पोरेट टैक्स कट के बाद अभी जो रियल्टी सेक्टर को जो बूस्ट दिया गया है, अगर हम उसकी बात करें, इस सप्ताह मेजर डेवलपमेंट है वो, उसको आप कितना एक बड़ा स्टेप मानते हैं इकोनॉमी के लिए, जो कंज्यूमर्स हैं उनके सेंटिमेंट को बूस्ट देने के लिए? देखिए, जो सरकार के जो द्वारा कदम उठाए गए हैं पिछले 2 महीनों में, 1.5-2 महीनों में, वो काफी कंस्ट्रक्टिव है और डायरेक्शनली करेक्ट है। अब देखिए, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है सरकार के पास कि इतनी बड़ी इकोनॉमी को वो ओवरनाइट टर्न कर दें। कोई देश नहीं कर सकता ऐसा, और उसमें समय लगता है। पर डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने बहुत रैपिडली स्टेप्स लिए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत स्लो स्टेप्स हैं या बहुत, और काफ़ी बोल्ड स्टेप्स हैं। जैसे आपने रियल्टी सेक्टर फंड की बात करी, देखिए भारत में ऐसा कभी अटेम्प्ट नहीं किया गया। प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स जो फंसे हुए हैं और वहाँ पर उनको एक वायबिलिटी गैप फंडिंग देना, उनको रीस्टार्ट करना एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं आपको अनुमान देता हूं उसका। एक अनुमान था एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का, कि उन्होंने कहा ये 25,000 करोड़ का फंड नहीं है, इसका रियल इंपैक्ट जो है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का रहेगा इकोनॉमी के लिए। इट इज लाइक एक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़। तो देखिए, ये कदम जो है, अगेन जो पहला इसका इंपैक्ट आना शुरू होगा वो शायद नेक्स्ट क्वार्टर में, यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में, जनवरी मार्च क्वार्टर में देखेंगे। तो ये कदम जो है डायरेक्शनली करेक्ट है, लेकिन इसका असर आने में इकोनॉमी में डेफिनेटली 3 से 6 महीने लगेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम इसका अच्छा असर देखेंगे इकोनॉमी के ऊपर, एंड वी विल सी ग्रोथ पिकअप इन नेक्स्ट ईयर। और आपको क्या लगता है कि जो कंजम्पशन है उसको भी क्या बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि कई जो लोग थे वो EMI भी दे रहे थे, अपने रेंट्स भी दे रहे थे। जब इस तरह की एक मूव आती है सरकार द्वारा, तो आपको लगता है कि जो आम नागरिक है जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका एज अ कंज्यूमर भी उत्साह बढ़ता है? देखिए, सेंटिमेंट का भी बहुत बड़ा असर होता है कंजम्पशन पर। यदि हम मायूसी में हैं या हमारा सेंटिमेंट डाउन होता है कंज्यूमर का, तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता, कंजम्पशन भी नहीं करता। और खासतौर से ये जो रियल्टी सेक्टर, ये तो इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट करीब वी हैव मेड असेसमेंट, जैसे मैंने पहले कहा, 4 to 5 टाइम्स जो पैसा खर्च होता है रियल्टी में, क्योंकि उससे स्टील क्षेत्र, सीमेंट क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, एवरीथिंग, मतलब इकोनॉमी का आप कह सकते हैं कि हर जो सेक्टर है और जॉब्स भी जनरेट होते हैं, से कनेक्टेड होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है डेफिनेटली आने वाले समय में। और बड़ा मुश्किल था, आसान नहीं था इसको, फंड को स्ट्रक्चर करना। एक बड़ा इनोवेटिव स्ट्रक्चर है जिसके तहत इनफैक्ट इसको शायद अमली जामा पहनाना भी बहुत मुश्किल, बहुत पेचीदा, आसान काम नहीं था। और हम लोग सोचते थे कि ये सरकार इसको क्या शेप देगी जिसमें कि प्रोफेशनल ऐसा भी ना बने कि कल को ये एक और ब्लैक होल बन जाए जिसमें पैसा सरकार डाले और वो जाया हो जाए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है। आइए रुक करते हैं शेयर बाजारों का। हमने उसका शेयर बाजारों का जिक्र काफी बार किया अपनी चर्चा में। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 330 अंक लुढ़ककर बंद हुआ। ये गिरावट नकारात्मक वैश्विक संकेतों और आर्थिक वृद्धि पर चिंताओं के चलते मूडी द्वारा भारत की क्रेडिट रेटिंग आउटलुक कम कर देने के बीच आई। हाल में रिकॉर्ड स्थापित करने वाली तेजी और अत्याधिक मूल्यांकन पर उत्पन्न असहजता के चलते हुई मुनाफा वसूली से भी बाजार ने गिरावट का रुख आया। दिन भर मंदी में रहने के बाद 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स में थोड़ी देर के लिए तेजी आ गई और वह 40,749 के ताजा अंतरदिवसीय उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। लेकिन ये तेजी कायम ना रह सकी। कारोबार की समाप्ति पर सेंसेक्स 0.81% का कुल नुकसान दर्ज करता हुआ 40,324 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अधिक विस्तारित निफ्टी 0.86% की मंदी से 104 अंकों की गिरावट दर्ज करता हुआ 11,908 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का रुख था। BSE
बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.79% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.53% की गिरावट दर्ज हुई. Equity benchmark BSE Sensex today tumbled 330 points amid negative global cues and India's credit rating outlook cut by Moody's citing growth concerns. Profit booking following the recent record-setting run and unease over frothy valuations also took their toll. Trading on a weak note throughout the day, the 30-share Sensex briefly turned positive to hit a fresh intraday high of 40,749 but failed to sustain the momentum. It finally ended 0.81% lower at 40,324. Similarly, the broader NSE Nifty plunged 104 points or 0.86% to end at 11,908. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index fell 0.79% while the Small Cap Index declined 0.53%. The market breadth was negative. On the BSE, 1,040 shares rose and 1,482 shares fell. A total of 175 shares were unchanged. The Sensex had closed at fresh lifetime highs in 3 of the 5 sessions this week, while the Nifty had reclaimed the key 12,000 mark after 5 months. During the action-packed week, the Sensex advanced 159 points or 0.39% and the Nifty inched up 18 points or 0.14%. Today, top losers in the Sensex pack included Sun Pharma, Vedanta, ONGC, TCS, HUL, ITC, NTPC, Asian Paints and Infosys shedding up to 4.2%. On the other hand, Yes Bank, IndusInd Bank, ICICI Bank, Kotak Bank, Tech Mahindra and HCL Tech rose up to 3.8%. Sectorally, BSE, FMCG, metal, oil and gas, healthcare, IT, tech, telecom and power indices fell up to 1.8%. BSE Realty, BankX and consumer durables indices rose up to 1.6%. What's your view in the coming week? Last week Sensex advanced almost 159 points. What do you anticipate? Although it's bad to play this kind of numbers. I know. Predictions. It's always very difficult to predict the markets in the short term. In fact, it's very strange because it's easier to predict the markets in the longer term than in the shorter term. So, my own sense is that we've seen the markets rise in a tier. Over the last couple of weeks, they really hit record highs. Not only in India, the worldwide we saw markets hitting new highs. All of them record highs. All across the world, and in India also we saw very substantial buying by foreign institutional investors. In fact, probably 2019 will be the first year in last 5 years when FIIs will be net buyers. In fact, DIIs are slightly negative. In fact, DIIs have been booking profits lately because they usually they are playing contrary to the FII plays. But having said that, I think today's market action, while there was some trigger in the morning because of Moody's downgrade, I don't think market really took it very badly initially, and we saw the markets rebound a little bit, but I think there was profit booking at higher levels. So if you ask me, I think markets are going to consolidate in a tight range in the next couple of weeks, probably around 11,800, 12,200 kind of range, 400 points. Very difficult to say, but that's my sense. So we might see narrow trading kind of a range in the markets for a couple of weeks. Markets will consolidate, and then because much of the earnings season is now behind us, so we have the numbers for September quarter, which we were expecting to be very bad. They turned out to be better than what we expected. Profits were better, and in case we get the markets gets sense that the December quarter is going to be better, then I think somewhere around end of this month we could see the markets pick up again. If you really ask me, my own sense is that by the time we have the budget coming up, which is in February 2020, that is about 4 months away, I think the markets will be closer to 12,500, 13,000 than lower. So I'm really biased to the upside right now. So Puneet, the corporate earnings और reforms जो सरकार निरंतर ले रही है, उन सबको देखते हुए और आप जो ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं 12,500 की, उसको देखते हुए क्या हम ये माने कि ये आधारभूत तेजी है? कहीं कोई इस तेजी को हम कुछ ऐसी शंका की नजर से तो ना देखें कि फ्रेजाइल है, शायद कोई बबल क्रिएट हो रहा है? कुछ आपको ऐसा आशंका लगती है? तो सुनो, मैं आपकी इस बात को देखिए, जो यदि हम अर्निंग्स को देखें और वैल्यूएशन को देखें तो डेफिनेटली जो निफ्टी की वैल्यूएशन लगती है वो ज़्यादा लगती है. हमारा अंदाज़ा ऐसा है कि जो निफ्टी की अर्निंग्स पर शेयर जो आएगी वो रफली इस साल जो है वो 600 रुपये से 650 रुपये की 1920 में जो रहेगी. तो करंट वैल्यूएशन यदि मैं देखता हूँ तो इसका पी मल्टीपल जो है
सॉरी ये 12 मंथ फॉरवर्ड अर्निंग्स बता रहा हूं मैं आपको। अगर हम पीछे की अर्निंग देखेंगे तो पी मल्टीपल जो है वो 27 के आसपास है, जो बहुत ज्यादा लगता है। पर जो ट्रेंड है प्रॉफिट्स का कंपनीज का, एक क्या होना चाहिए ऑप्टिमम पी लेवल? देखिए भारत के लिए जो भारत का जो एवरेज रहा है, बिकॉज हम ना एक प्रीमियम पर रहते हैं टू द अदर इमर्जिंग मार्केट्स, भारत का जो प्रीमियम जो आइडियल पी मल्टीपल रहा है वो 20 और 25 के बीच रहा है, 22-23 के आसपास रहता है, वो ठीक रहता है। 25 से ऊपर हम थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मानते हैं। तो अभी जो है वो 27 है, तो ये कंसर्न था कि ये मार्केट्स ओवर वैल्यूड है, शायद यहाँ पर गिरावट आ सके। लेकिन जब हम एक साल आगे अर्निंग्स की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट, जो अर्निंग्स एस्टिमेट है वो बढ़ गए हैं, वो करीब जैसे मैंने बताया 600 से 650 का अंदाजा है अब पी इसका अपना निफ्टी का। तो इससे हमें लगता है कि फॉरवर्ड अर्निंग्स जो है वो 20 और 21 के बीच में पे मल्टीपल है, जो मुझे लगता है रीजनेबल है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि गोइंग फॉरवर्ड मुझे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं। और अब वैल्यूएशंस की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप की अभी क्या स्थिति है? क्या ये जो रैली है ये ब्रॉड बेस्ड है? मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी क्या संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस है वो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस से बहुत क्लोजली लिंक रहती है। यदि आप देखें लार्ज कैप्स के ऊपर इकोनॉमिक डाउनटर्न और इकोनॉमिक अपटर्न का उतना असर नहीं पड़ता, और जो मिड कैप्स स्मॉल कैप्स है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हैं या घटते हैं। यदि मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पिकअप करने वाली है, तो मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आने वाले समय में अच्छी हम रेटिंग देखेंगे ऑन द अपसाइड। इसलिए मैं कहूंगा कि तो वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, अंडर ओन्ड है मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स। साथ में अगर अर्निंग्स आउटलुक बेटर होता है तो डेफिनेटली वहां पर एक हम अप ट्रेड देख सकते हैं। So would you recommend that people get into mid caps at this point in time, either through the mutual fund route or? Yes, I think it's a good time to invest in mid caps. If you look at the history of mid caps, Mid caps have, I mean, there's a problem that thanks to the SEBI classification now you have 0 to 100, 1 to 100 is large cap, 101 to 250 is mid cap, and 250 to 4,000 is or 5,000 is small caps. So the size of I'm really glad you brought this up, because this has created a huge confusion about what is a mid cap, because I don't think SEBI had any business getting into this, that to define what is a large cap, to define what is a small cap or mid cap, but somehow SEBI has gone ahead and done it, and I think it has done a lot of damage to the markets. It has done a lot of damage to the investors and the economy. Anyway, that is another subject. But I would say mid caps are largely companies in the BSE 500, which are not in, let's say, not in the top 100, but between BSE 100 and 101 to, let's say, BSE 500. And investors should be cautious to invest in companies that have good managements. So wherever they feel that corporate governance is not an issue, managements have long-standing reputation, I think it's a very good time to invest in mid caps, even in small caps, because many mid caps have actually become small caps. So it's an opportunity to invest in small caps and mid caps with good proven management. और अगर हम सेक्टर्स की बात करें पुनीत, तो रियल्टी और बैंक, निफ्टी बैंक और निफ्टी रियल्टी ने आउट परफॉर्म किया है पिछले कुछ हफ्तों में, ऑब्वियसली जो न्यूज आई है उसके बेसिस पे। और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको आप आशावाद आपको है कि बेटर परफॉर्म करेंगे? आपने अच्छा एक सवाल पूछा कि देखिए न्यूज हेडलाइंस अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा रियल एस्टेट सेक्टर भारत में काफी तकलीफ में होगा और काफी परेशानी में है, क्योंकि हर रोज हेडलाइंस आती हैं फ्लैट्स को लेकर, रियल एस्टेट को लेकर। लेकिन बीएसई और रियल एस्टेट इंडेक्स, यानी जो लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनीज हैं, यदि उसके इंडेक्स को हम स्टडी करें पिछले 6 महीने के, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। रियल एस्टेट कंपनी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, उनके शेयर्स के दाम भी बढ़े हैं, उनके प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। तो मुझे लगता है चुपचाप एक जैसे साइलेंट रैली रही है रियल एस्टेट में, और आने वाले समय में इसमें हम और बढ़ावा देख सकते हैं। इसी से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, आप सिरेमिक्स की बात कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं, मुझे लगता है वो सब, प्लस कॉर्पोरेट बैंक्स, जो टर्न अराउंड आ रहा है इकोनॉमी में, मुझे लगता है उससे कॉर्पोरेट बैंक्स को भी काफी फायदा होगा। रुपए पर नजर डाल देते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 31 पैसे की गिरावट दर्ज करता हुआ 3 सप्ताह से अधिक के न्यूनतम स्तर 71 रुपए 28 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया। 16 अक्टूबर के बाद रुपए का ये सबसे निचला समापन स्तर है। सप्ताह भर में रुपए में डॉलर के मुकाबले कुल 47 पैसे की गिरावट दर्ज हुई है। रुपए में ये जो गिरावट आ रही है, इसके क्या कारण है? क्या ये चिंताजनक है? आज नहीं, ऐसा नहीं था। आज खास तौर से तो मूडीज का रिएक्शन था टू सम एक्सटेंट। सेलिंग रहती है बॉन्ड्स में भी, जो
मैंने कहा कि कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा सेलिंग करते हैं, और रुपये में काफ़ी मजबूती भी रही थी पीछे, हमने गेन्स भी देखे थे, तो मुझे लगता है वो प्रॉफिट बुकिंग और ये जो सेलिंग थी, न्यूज़ ड्रिवन सेलिंग, उसका ये असर है, पर बहुत कोई लंबा मुझे ट्रेंड नहीं लगता है ऐसा इसका। आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अधिकांश दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजार आज गिरावट में रहे। चीनी आयात पर शुल्कों को वापस लेने के प्रति वॉशिंगटन में आंतरिक विरोध की रिपोर्टों से अमेरिका और चीन के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की संभावना पर आशावाद प्रभावित हो गया। हांगकांग का हैंगसेंग और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक दोनों 0.7% की गिरावट में रहे। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.5% गिर गया और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.3% का नुकसान दर्ज हुआ। हालांकि जापान के निक्केई सूचकांक में आज 0.3% की बढ़त दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां के बाजारों में भी गिरावट का रुख था। लंदन का फुट्सी 0.4%, फ्रांस का कैक 0.3% और जर्मनी का डैक्स 0.2% के नुकसान पर थे। If you look at the US market, US stocks closed higher yesterday, though indexes paired gains after report raised fresh worries about the outlook for a deal. China said it had agreed with the United States to remove tariffs in phases, while state-owned Xinhua news agency said Beijing was also considering removing restrictions on poultry imports. The Dow Jones Industrial Average rose 0.7%, the S&P 500 gained 0.3%, and Nasdaq Composite Index added 0.2%. Puneet, one question that is there in a lot of, especially the HNIs these days, is to do some sort of country diversification and look at US as a market, but they've had a 10-year bull run. Is this a good time to diversify? I'm a bit cautious on investing in markets abroad, also because of valuation issues, currency issues of course are there, and then we don't understand those markets that well. That money, if one wants to diversify, maybe only very small part of the money can be invested abroad. What percentage would you say would be a good number? Not more than 5-10%. और पुनीत, यूएस चाइना का जो एक लग रहा था कि समझौता होने वाला है, अब फिर आज जो रिपोर्ट्स आई हैं, कितनी आपको आशा है कि ये अगले महीने इंक हो जाएगी इंटरिम डील? देखिए, मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली ये डील अपनी किसी ना किसी शेप में तो जरूर इंक होगी, बिकॉज चाइना और यूएस ने काफी स्ट्रांग पोजीशन ले लिया और प्रेसिडेंट ट्रंप विल गो अहेड एंड साइन दिस डील। वो डील में कितना ग्राउंड कवर कर पाएंगे, कितने रोल बैक कर पाएंगे, ये मुझे भी मुझे क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा, और इसका लास्ट मिनट तक मुझे लगता है काफ़ी नेगोशिएशंस या फ्लक्चुएशन रहेंगी इसमें। If you look at the oil markets, oil prices today fell, weighed down by lingering uncertainty about how close the United States and China would to a trade deal and on rising US crude inventories. Brent crude prices were trading around $61.30 per barrel. WTI prices were at around $56.30 per barrel when reports last came in. There are two things about oil. One is the Aramco IPO December 11th and the elections, Brexit 12th December. Are we going to be in the 60 to 62 range, or are we likely to move to 65 to 70? I think, Ravi, we will remain in this range because, and of course you'll be aware that Russia has ruled out any further cuts in production and in oil production. So clearly I think we are going to be in a situation where oil will be in fairly easy supply. So I think it will remain around 60 plus minus $2. चलते हैं सराफा बाजार की ओर। कमजोर वैश्विक रुख के बीच सोना 196 रुपए सस्ता होकर 38,706 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी का मूल्य 46,454 रुपए प्रति किलो के पूर्व स्तर के मुकाबले 956 रुपए लुढ़ककर 45,498 रुपए प्रति किलो पर दर्ज हुआ। हालांकि वैश्विक बाजार में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। सोना $1,471 प्रति आउंस और चांदी $17.06 प्रति आउंस पर स्थिर बने हुए थे। कई लोग पूछते हैं कि सोने का भाव कब कम होगा, हम कब खरीद पाएंगे, क्या लगता है आपको, क्या ट्रेंड रहेगा? मैं मानता हूं कि सोने का दाम कोई बहुत ज्यादा यहाँ से कम नहीं होगा, लेकिन सच बात तो यह है कि बहुत ज्यादा यहाँ से बढ़ेगा भी नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा इस प्रोग्राम में कि $1,500 से ऊपर सोने को जाने का काफी। और डोमेस्टिक रेट देखिए वही 39,000 विल बी पीक, और ये शायद पीक कई वर्षों तक रहे। ऐसा देखा गया है कि गोल्ड के दाम जो है वो काफी स्टेबल रहते हैं, तो जल्दबाजी में ना खरीदें, अपने आराम से खरीद सकते हैं यदि कोई खास कारण ना हो तो। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हमें चर्चा को भी यही समाप्त करना होगा। पुनीत, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सोनू। Thank you, Puneet. That was a wonderful discussion. Before we close, a reminder of the headlines. Government says fundamentals of economy are robust with inflation in control. Equity benchmarks decline around 0.8% amid negative global cues, and Rupee weakens 31 paise against the US dollar. That's all we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.